Good afternoon, class. Today we started new topic, Unit 5 spoilage या फिर बोल सकते हैं फार्मास्यूटिकल स्पॉइलेज, फूड इंडस्ट्री स्पॉइलेज। तो स्पॉइलेज से सबसे पहले अपन समझे स्पॉइलेज है क्या। स्पॉइलेज स्पेसिफिकली एक नेगेटिव टर्म है कि अपने टेटोराइजेशन ऑफ स्पेसिफिक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट और फूड प्रोडक्ट। अपन को पढ़ना है कितने टाइप के स्पॉइलेजेस होते हैं, टाइप्स ऑफ स्पॉइलेज, एंड देन फैक्टर्स अफेक्टिंग टू इनिशिएट स्पॉइलेज। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इनिशिएट करते हैं या इंक्रीज करते हैं स्पॉइलेज को। तो अपन को आज पढ़ना है स्पॉइलेज। The action or process of spoiling, especially the deterioration of food and other perishable goods, any change which render a product unacceptable for human consumption. Complex event in which a combination of microbial and biochemical activities may interact. One of the major reasons that leads to preservation. प्रिजर्वेशन अपन इसलिए स्पेसिफिकली करते हैं, जैसे कि अपन ने कुछ क्लासेस पहले अपन ने पढ़ा था, फिर सबसे ज़्यादा माइक्रोबियल कंटेमिनेशन जो होता है, ऐसा देखा गया है कि जो भी इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं या थोड़ा बहुत ज़्यादा रूमिंग होती है, तो वहाँ पे जो अपने स्टेराइल प्रोडक्ट होते हैं वहाँ पे कंटेमिनेशन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो वन ऑफ द मेजर रीजन दैट लीड्स टू प्रिजर्वेशन। तो जितना इम्पोर्टेंट प्रिजर्वेशन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए उतना इम्पोर्टेंट है फूड प्रोडक्ट के लिए भी। तो माइक्रोबियल स्पॉइलेज, दिस रिफर्स टू डैमेज टू फूड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट दैट इज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, मोल्ड, यीस्ट, एनीथिंग. Microorganism can grow in almost all kind of food product. As microorganism occurs everywhere around us, there is always a risk of microbial spoilage. स्पेसिफिक माइक्रोबियल स्पॉइलेज होने का जो अपन माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं, वो सारे स्पीसीज कारण होते हैं माइक्रोबियल स्पॉइलेज के लिए। उसका एग्जांपल अच्छे हैं बैक्टीरिया, मोल्ड एंड यीस्ट, ये होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। इनकी वजह से माइक्रोबियल स्पॉइलेज होता है, या फिर वो फूड प्रोडक्ट हो या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो। And types of spoilage, microbial spoilage and non-microbial spoilage. Based on the rate of spoilage, there are three types. Highly perishable meat, fish, food product. Semi-perishable potatoes, some apples, varieties and nut meats. Non-perishable or stable sugar, flour and dry beans. Pharmaceutical spoilage. This is the third category. First is microbial, second is non-microbial, third is my pharmaceutical spoilage. And pharmaceutical micro spoilage. Spoilage of pharmaceutical products and drugs are referred as the change in the physical and chemical property in such a way that the formulation or therapeutic agents gets deteriorate and become not suitable for use. Pharmaceutical products in a combination of two things, active और फॉर्मुलेशन एडिटिव्स, या फिर एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है एंड सेकंड इज फॉर्मुलेशन एडिटिव्स होते हैं, क्योंकि अपन एज ए स्पेसिफिक शेप साइज है उसको फॉर्मुलेशन देने के लिए अपन उसमें ऐड करते हैं. If there is any change in their efficacy action, as it is said to be spoiled product which cannot be used. कोई भी चेंज आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर इन्वायरमेंटल चेंज आता है या प्रिजर्वेशन में अपन उसे ठीक तरीके से प्रिजर्व नहीं करते कि स्पेसिफिक टेम्परेचर पे एटमॉस्फेयर में, तो वहाँ पे जो चेंजेस आते हैं वो आपके प्रोडक्ट को स्पॉइल कर देते हैं. वो आपके एक्टिव इंग्रेडिएंट में भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल आपको देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं वो अम्बर्ड कलर बॉटल में आते हैं. अम्बर्ड कलर में इसलिए आते हैं कि डायरेक्टली अगर उसमें लाइट जाती है, प्लेन ग्लास में रखते हैं तो उसमें केमिकल रिएक्शन होके डेटोराइज या स्पॉइल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. Pharmaceutical spoilage. There are several factors that cause pharmaceutical spoilage. Mainly, we studied about microbial spoilage of pharmaceutical product, physical, chemical, and microbial. They are divided into three types. Physical deterioration या spoilage होता है deterioration of pharmaceuticals due to physical factors like heat, temperature, evaporation, etc. Second is chemical deterioration of pharmaceuticals due to chemical reactions like oxidation, reduction, hydrolysis, photolysis, ionization, etc. Microbial
Deterioration of pharmaceutical due to contamination of any microbial cell like bacteria, fungi, molds, etc. फिजिकल में टेम्परेचर हुआ, हीट हुई, इवापोरेशन, कोई भी चेंजेस आए इन्वायरमेंट में तो वो सब आ जाएगा फिजिकल कैटेगरी में. केमिकल में स्पेसिफिकली केमिकल रिएक्शन हो जाए, जैसे मैंने बताया डायरेक्ट लाइट पड़ने से हो सकता है कि डायरेक्ट लाइट से उसमें मॉइस्चर आ जाए, मॉइस्चर आने के बाद उसका डेटोरेशन बढ़ जाए, या फिर वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन को प्रिफर करती हुई इनिशिएट करती है, रिडक्शन को, हाइड्रोलिसिस को, फोटोलिसिस को, या आयनाइजेशन. थर्ड इज माइक्रोबियल कंटेमिनेशन या माइक्रोबियल स्पॉइलेज, जो अपन ने पढ़ा, बाय बैक्टीरिया, फंगी एंड मोल्ड्स, ईस्ट एक्सेट्रा. Microbial spoilage of pharmaceuticals. Microbial spoilage includes the microbial contamination of pharmaceutical products with the microbes, which leads to spoilage of product affecting the drug safety and quality and is not intended for use. Shortly, microbial spoilage of pharmaceutical products is a deterioration of pharmaceuticals with contamination of microbes. It decreases the stability and intensity of the product. Types of microbial spoilages. Number one is physicochemical, chemical and biological. Physicochemical में आता है viable growth, gas production, physical spoilage, olfactory, coloration. Chemical में आ जाता है hydrolysis, acetylation, depolymorphinization, degradation, metabolization. Biological में आता है release of toxins, microbials, metabolites, changes आना. So they are the types of microbial spoilage. Number one is physicochemical, second is chemical, third is biological. So first we discuss the physicochemical. In this kind of spoilage, there are some chemical changes are caused by microbial species, and due to these changes, the physical property are also get altered or deteriorated. Thus, it is called the physicochemical spoilage. Number one is viable growth. In this kind of spoilage, microbial cells form a viable layer over the surface of pharmaceutical formulation. This layer or the presence of microbial cell can be clearly seen by naked eyes. Example, layer of mold over syrup or sugar containing product, cream, ointment. Coloration. Color changes occur due to the alteration in component of chemical nature, and these changes are caused by change in pH for the formulation, reduction of the product, production of some other metabolites by microorganism. Example is Pseudomonas species microorganism metabolize wide range of metabolites that cause coloration of blue, green, brown. Surface decoloration of tablet containing biological product by some molds. कलर में चेंजेस आ जाता है. यहाँ पे अपन को वेबल ग्रोथ दिखती है. यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया लेयर ऑफ मोल्ड्स ओवर सिरप और शुगर कंटेनिंग प्रोडक्ट, क्रीम, ऑइंटमेंट. यहाँ पे कलरेशन में चेंजेस आ जाता है. वो केमिकल नेचर की वजह से भी हो सकता है या फिर चेंज इन पीएच ऑफ द फॉर्मुलेशन या रिडॉक्स ऑफ द प्रोडक्ट की वजह से, प्रोडक्शन ऑफ सम अदर मेटाबोलाइट बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म. यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है सीडोमोनस स्पीसीज माइक्रोऑर्गेनिज्म मेटाबोलाइज वाइड रेंज ऑफ मेटाबोलाइट्स that causes coloration of blue, green, brown. Then gas production. Some microorganism contaminant in pharmaceutical formulation produces gas by their metabolic activities and form gas bubble and broth form over the formulation. Formulations containing carbohydrates or starchy material are more susceptible for gas production. Example, production of CO2 in syrups caused by osmotolerant mold and yeast. Calbiscilla product gas is cream and ointment containing vitamins and protein. Desulfur vibroxides oxidize simple organic compound and produce hydrogen sulfide in suspension. Physical spoilage. These are some changes in physical appearance caused by microbial cell activity. Example, in emulsion, some microbial cells cause hydrolysis
ऑफ ऑयल फेज। ऑयल फेज में हाइड्रोलिसिस की जो cause changing in oil water equilibrium and make emulsion unstable. Hydrolysis of oil also affect pH of formulation and alter the stability of emulsion. ये हुआ emulsion का एग्जाम्पल कि स्पेसिफिकली ऑयल फेज में हाइड्रोलिसिस होगा तो वो वाटर ऑयल ऑयल का इक्विलिब्रियम अनस्टेबल कर देगा, जिससे आपका इमल्शन प्रोडक्ट जो होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा और वो जो ऑयल स्पेसिफिकली हाइड्रोलिसिस हुआ है ऑयल पार्ट में, उससे आपके पीएच पे भी इफेक्ट पड़ेगा, तो इससे पूरी तरह आपका इमल्शन अनस्टेबल हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल, इन सिरप्स माइक्रोबियल सेल्स मेटाबोलाइज sugar molecules and due to which the concentration of syrup change and product become unstable. Fifth, olfactory spoilage. Spoilage by some organism and mold generated unpleasant smell from the product. This kind of spoilage mainly caused by microbial cell that produces sulfur containing gases, SO2, H2SO, and fishy smell due to formation of fatty acid along with odor generated by amines and alcohol production. कुछ organism होते हैं mold generated unpleasant smell from the product. This kind of spoilage mainly caused by microbial cell that produce sulfur containing gases and fishy like smell जो होती है वो amine और alcohol production में specifically देखी गई है। Example दिया है, contamination in syrup of tolu by penicillin produces toluene like smell. Acetinomycetes produces smell of lysosamine in water phase used for formulation. Then chemical spoilage. There are the various types of chemical spoilage in pharmaceutical compound. These occur due to various types of chemical reaction mediated by contaminating microorganism. Number one is hydrolysis. Some bacterial cells containing enzymes that catalyze hydrolysis of pharmaceuticals. Example, atropine hydrolyzed by Pseudomonas bacteria, aspirin hydrolyzed by esterase producing bacteria, gelatin hydrolyzed by Bacillus and Colitrium species. Second is acetylation. Some microorganism cellular enzyme causes acetylation of drugs and causes loss of activity. Example, chloramphenicol acetylation caused by Staphylococcus gram-positive bacteria by the enzyme chloramphenicol acetyl transferase. Depolymerization. It is a process in which polymers are degraded to their monomers. A lot of polymers are used in formulation of many types of pharmaceutical preparation as diluent, binders, thickening, suspending agent, etc. Examples, starch depolymerized by bacteria amylase, pectin depolarized by bacterial pentinase, dextran depolarized by bacterial dextranase, cellulase depolarized by bacterial cellulose. These are the example of depolymerization, जो कि स्पेसिफिकली डाइल्यूएंट्स बाइंडर और थिकनिंग एजेंट में पॉलीमर्स के ज़्यादातर होने के कारण डीपॉलीमराइजेशन होने की चांसेस होती है, इसलिए एग्जांपल भी लिखे हैं मैंने। Degradation due to microbial contamination, the activity, therapeutic agent or the formulation ingredient can be degraded or metabolized. Example is penicillin degraded by beta-lactamase containing bacterial cells, fatty acid metabolized by some molds,
Pretinosan degraded by Apigillus species bacteria. Biological spoilage. Some bacterial cells contaminated the pharmaceuticals and utilized the various compounds present in that formulation to perform their metabolic activities. Due to these metabolic activities, the microbial cells produces certain chemical which they release in pharmaceutical preparation. This is called biological spoilage. मेटाबॉलिक एक्टिविटी में चेंजेस आने के कारण या स्पेसिफिक फॉर्मुलेशन में होने के कारण जो चेंजेस होते हैं वो बायोलॉजिकल स्पॉइलेज मेनली टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिलीज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोबियल टॉक्सिन या माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स microbial toxins several microorganisms produce toxic molecules that may cause spoilage of pharmaceutical formulations such as endotoxin produced by some gram negative bacteria like E. coli, exotoxin by Clostridium botulinum, microbial metabolites like bacterial metabolites are the biosynthetic product from microbial cells. Bacterial cells produces various metabolites which cause product spoilage because these metabolites are toxic to humans. Examples are different amines and organic acids from bacterial cells, metabolites from fungi and molds. Fungi and molds are more specifically grow on the formulation having like talc, kaolin and starch. जिस स्पेसिफिक फॉर्मुलेशन में ये तीन चीज़ें होती हैं वहाँ पे ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं किसके फंगाई एंड मोल्ड्स के रीजन ऑफ कंटेमिनेशन अब सबसे पहले पता लगा है कि कंटेमिनेशन या स्पॉइलेज होने के रीजन क्या है द प्रोडक्ट गेट कंटेमिनेट ड्यू टू वेरियस रीजन्स लाइक accidentally exposure to the environment, improper storage condition, inadequate preparation of formulation, improper sterilization. तो जो सबसे पहला पॉइंट अपने स्टेलाइजेशन का है अगर अपन ने वो स्पेसिफिक कंडीशन को फॉलो नहीं किया है उसके जो भी फॉलो प्रिपरेशन मेथड्स हैं वो फॉलो नहीं किए तो वहाँ से अपना कंटेमिनेशन स्टार्ट हो जाता है अगर अपन ने प्रॉपरली अपने प्रोडक्ट अपनी मशीनरी को फुली स्टरलाइज नहीं किया है अपने इंग्रेडिएंट को तो वहाँ से कंटेमिनेशन स्टार्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं फिर एक्सीडेंटली एक्सपोजर टू द एनवायरनमेंट एक डिपार्टमेंट से दूसरी जगह ले जाने में अगर एक्सीडेंटली एक्सपोज हो जाता है इन्वायरमेंटल में चेंज आ जाता है तो वो एक कारण है इन प्रॉपर स्टोरेज अपन ने उसके स्टोरेज प्रॉपर ना की हो इन्वायरमेंट इसका स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ना रखा हो और इनएडुकेट प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मुलेशन फॉर्मुलेशन के जो भी इंग्रेडिएंट्स या एडिटिव्स हैं उनका सही तरीके से अपन ने सिलेक्शन ना किया हो अब यहाँ जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग spoilage of pharmaceutical products. By understanding the influence of environmental parameters on microorganism, it may be possible to manipulate formulation to create conditions which are as unfavorable as possible for growth and spoilage within the limitation of patient's acceptability and therapeutic efficacy. The factors that affect the spoilage of nutritional factor, moisture content, redox potential part, storage temperature, pH, packaging design, and specific whole design of the product. First, we discuss the nutritional factor. Presence of nutritional material enable or favor microorganism to utilize these nutritional material as energy source and proliferate over pharmaceutical product. In any formulation, the presence of vegetable, herbal extract, or animal tissue or tissue extract provides nutritional support to microbial cell. Demineralized water यहाँ पे एक सबसे important point है अगर अपन sterile water demineralized water अगर अपन prepared by ion exchange material also contains some nutritional material which support the growth of सीडोमोनस बैक्टीरिया अपन डीमिनरलाइज वाटर इसलिए यूज करते हैं कि अपन सोचते हैं कि ये सबसे अच्छा वाटर है इसे अपन इजीली यूज कर सकते हैं बट बहुत बार कंडीशनल इन्वायरमेंटल चेंज होने के कारण और
सम सीडोमोनस स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया ग्रो होने के चांसेस रहते हैं डीमिनरलाइज वाटर में, क्योंकि अपन उसे प्रिपेयर करते हैं किस मेथड से, बाय आयन एक्सचेंज मेथड से अगर अपन करते हैं तो। मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशन आर मोर सपोर्टिव फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ। जितना ज़्यादा फॉर्मुलेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा उतना माइक्रोबियल ग्रोथ होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। मॉइस्चर कंटेंट अपन पढ़ते ही जा रहे हैं, जितना ज़्यादा वाटर एक्टिविटी बढ़ेगी, मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगा, तो वहाँ से स्पॉइलेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेडली नीड्स वाटर और मॉइस्चर टू ग्रो। जितना ज़्यादा उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलेगी उतना ज़्यादा मॉइस्चर फॉर्म करेगा। द प्रेजेंस ऑफ अनकॉम्प्लेक्स वाटर इन एनी फॉर्मुलेशन सपोर्ट्स माइक्रोबियल ग्रोथ। Greater the solute concentration, lesser the activity. When solutes dissolve in water, they form hydrogen and other bonds with water and form complex water. The free or unbounded water molecules are termed as uncomplex water, and this uncomplex water supports microbial growth. Condensed water film sometimes accumulate. Condensed water film sometimes accumulate over some dry pharmaceutical formulations like tablet or oil due to storage in humid atmosphere. Supports fungal, agalgalus and yeast growth को support करता है। बहुत बार मैंने जैसे बार बार बताया, अगर अपन स्पेसिफिक टेम्परेचर एनवायरमेंटल चेंजेस आते हैं तो उसमें सबसे पहला इफेक्ट आता है मॉइस्चर कंटेंट आने का, क्योंकि बहुत सारे इंग्रेडिएंट या एडिटिव्स होते हैं जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, लेकिन उसके भी जो कि मॉइस्चर को फॉर्म करते हैं, तो वहाँ से आपके स्पेसिफिक कंटेमिनेशन या स्पॉइलेज बाय यूजिंग बाय इनिशिएटिंग मॉइस्चर कंटेंट बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं और वाटर एक्टिविटी बढ़ती है। Microism water activity, Clostridium botulinum is 0.94, Escherichia coli, E. coli जिसे अपन बोलते हैं 0.93, Salmonella species is 0.94, Shigella species is 0.96. Moisture film over viscous syrups can also increase water activity and support growth of fungi and yeast. Some halophilic bacterial grows in high salt condition. Minimal water activity for some microbial cells for growth. Then redox potential. The oxidation reduction or redox potential is defined as the ratio of the total oxidizing power to the total reduction, or in more easy way it's a property of any chemical to give or accept electron. Microbial growth in any environment is influenced by its oxidation reduction balance. Like redox reaction, electron transfer is major factor for energy production. If oxygen is present in any formulation, then this condition favors microbial growth. If any product get infected by microbial cell. Packaging material and design. Packaging can have major influence on microbial contamination and spoilage of pharmaceuticals. Multi-dose containers are more affected by microbial contamination because they are again and again exposed to environment when the drug is withdrawn from container. Wide opening mouth container that contain formulation of vegetable oils, protein, vitamins, animal extracts are readily contaminated as they provide large surface area exposure to the environment. Storage temperature is the another factor. Pharmaceutical formulation can affected by microbial cell between the temperature range of minus 20 degree to minus 60 degree centigrade. Below minus 20 degree, almost no microbial contamination is observed, and the same as above, 60 degree microbial growth suppressed. The reason for that is inactivation and denaturation of cellular enzymes, which are responsible for cell metabolic activity. Water for injection is stored at 80 degrees centigrade before preparation to minimize bacterial growth and to prevent bacterial activity to produce and release pyrogen
to the water. The next factor is pH of pharmaceutical formulation. जैसे अपन अभी पूरे टॉपिक में डिस्कस करते आ रहे हैं, जहाँ पे भी पीएच चेंज होता है तो वहाँ पे स्पॉइलेज रेट बढ़ जाता है. pH is represent the potential of hydrogen ion. Some bacterial cells are grown better in acidic medium and some are in basic medium. This happens because in their favorable pH, the enzyme of bacterial cell are more active to perform their metabolic activity. Some preparation of pH around 5 to 6 favors growth of molds but inhibit bacterial growth. Some preparation having pH of 3 to 4 favor growth of molds and yeast. Example is fruit juice flavored syrup. Some preparation of neutral pH like mouthwashes, distilled water, antacid preparation are contaminated by bacterial cells. Examples is Pseudomonas species. Basic pH formulation inhibits bacterial growth. Magnesium and aluminum hydroxide gel is the good example of basic pH. Sometimes primary fungal growth occurs in any product. These fungal cells metabolize the chemical and produce acid and raise the pH of formulation and favor secondary bacterial growth. तो आज का टॉपिक था अपना स्पॉइलेज. स्पॉइलेज में अपन ने पढ़ा डेफिनेशंस, टाइप ऑफ स्पॉइलेज और इसमें सबसे इंपॉर्टेंटली अपने पढ़ा फार्मास्यूटिकल स्पॉइलेज, जिसमें माइक्रोबियल नॉन माइक्रोबियल पढ़ा. फिर अपन ने टाइप्स ऑफ माइक्रोबियल स्पॉइलेजेस पढ़े. फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़े. थैंक यू फॉर बीइंग विथ. नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा प्रिजर्वेशन.